Hi, yeah, we're going to do atomic structure आज. If you're wondering what this is, यहाँ पे इस कोने में ये क्या चीज़ है? ये मेरी स्क्रीन है, मेरी मोबाइल की स्क्रीन. This is showcasing the app I'm going to be using today. अगर आपने मेरे पिछले 2 सेशन नहीं देखे हैं, मैंने एक मोल कॉन्सेप्ट सेशन किया था 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए. एक सेशन किया सॉल्यूशंस का 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए. एंड दिस इज माय थर्ड ऐप प्रैक्टिस सेक्शन जिसमें मैं करने वाला हूँ. You guessed it right, atomic structure, that's the name of this one. All right, cool. So this is what I'm going to do. We're going to open this up. This is the practice section of the app. अगर आप इसको पहले ऐप देख चुके हैं, this is it. You don't have to open the app in this session. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. What we'll do is questions आएंगे जो मैंने नहीं देखे होंगे, आपने नहीं देखे होंगे, and we'll try and solve them together, right? And depending on अगर हम लोग ज्यादा सवाल करते जाते हैं, we will probably get more difficult questions. If we mess up one or two, maybe the difficulty will change. So not maybe, it will change. This is adaptive. Okay. If you're wondering ये क्या चीज है, as soon as you download the app and you go into it, this is the home page. यहाँ पे केमिस्ट्री में जाइए और केमिस्ट्री में जाके यहाँ पे लर्न सेक्शन में लाइब्रेरी में नीचे जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर कम हियर. ठीक है, कूल. दिस इज वेयर वी आर एट. चलो, बिफोर वी डू दिस ऐप वाली चीज, मेरी आवाज साफ आ रही है? आर यू एबल टू सी मी एंड हियर मी क्लियरली? लेट मी नो इन द चैट इफ दैट्स ओके. या, दिस इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे. ठीक है. एंड बिफोर वी स्टार्ट विद ऑल ऑफ दिस, लेट्स टेक अ सिंपल क्वेश्चन टू बिगिन विद, है ना. एक छोटा सा आसान सा चिल सा सवाल लेते हैं, where we don't have to worry about too many of these things, just to get us warmed up, and then we'll get back into this app wala business. ठीक है. Here's the question. Should pop up on your screen right now. Let me hide my screen here. Okay, great. Straightforward question. Atomic structure का बल्ब है, उसमें से कुछ लैम्डा एक फिक्स्ड मोनोक्रोमैटिक बल्ब है, मतलब कि एक लाइट एक वेवलेंथ निकल रही है. मोनोक्रोमैटिक मतलब देखो, जब लाइट होती है सफेद लाइट, उसमें सब वेवलेंथ होती है. मैं बोल रहा हूँ एक स्पेसिफिक कूल बल्ब है, इसमें एक वेवलेंथ निकल रही है लाइट की. ओके, दिस इज रेटेड एज 100 वॉट्स, मतलब दैट्स अ पावर रेटिंग. बल्ब की वही रेटिंग होती है. एंड 15% ऑफ दैट एनर्जी इज एमिटेड एज लाइट. क्रेजी, राइट? आई मीन, थिंक व्हाट इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन. सिर्फ 15% ऑफ दैट 100 वॉट कम्स आउट एज लाइट. इफ यू गॉट एक्चुअली पूरा 100 वॉट एज लाइट, यू वुड गो क्रेजी, लाइक बहुत ज्यादा हो जाता है. ठीक है. इसलिए वो जो हीट वाले जो बल्ब होते हैं ना, हाय ओम, गुड इवनिंग, हाउ यू डूइंग, वो जो येलो लाइट होता है ना, उसका वॉटेज ज्यादा होती है, बट काफी लॉट ऑफ इट गोज अवे एज हीट, और थोड़ा सा आपको मिलता है लाइट. वेयर एलईडी, इसीलिए एलईडी बाय द वे 5 वॉट की एलईडी इज एज गुड एज 40 वॉट का ये जो येलो वाली बल्ब होती है, क्योंकि उसमें देयर इज नो हीट लॉस, तो लॉट हायर परसेंटेज गोज इनटू लाइट. एनीवे, वो सब कहानी छोड़िए. यहाँ बोल रहा है 15%, 100 में से 15% निकलती है लाइट. तो कितने फोटॉन्स एक सेकेंड में निकले? हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन? कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन आउट? इसके बाद हम लोग करेंगे ऐप वाली चीजें. श्योर गगन? रिपीट ही तो कर रहे हैं. वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन. सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? इसमें दिया क्या है? मोनोक्रोमैटिक बल्ब है, एक वेवलेंथ निकल रही है, दिस. ओके, लैम्डा इज गिवन. ऑल राइट. सो व्हाट डू आई डू विद दिस? लैम्डा का क्या प्रूफ है? मुझे निकालने कितने फोटोन निकलने हैं. अच्छा, यू रिमेंबर एनर्जी वाज h nu. किस चीज की? ऑफ अ फोटोन दैट हैज दिस वेवलेंथ. वेल, नॉट वेवलेंथ, ठीक है, h nu के बजाय hc by लैम्डा लिख दो, विथ वेवलेंथ लैम्डा, राइट? उसकी एनर्जी होगी hc by लैम्डा ऑफ फोटोन. ठीक है. ये जो लाइट निकल रही है किस चीज की वेवलेंथ है? ये फोटोन की वेवलेंथ है. ठीक है. तो अगर लिखा है कि 100 वॉट एनर्जी है, मतलब कि 100 जूल पर सेकेंड. व्हाट इज 100 वॉट? 100 joule per second. This is the energy that is emitted. Okay. And 15% of that energy is emitted as light. 15%. 15%. मतलब कि if I take the energy, मतलब 100 जूल ले लेते हैं. ठीक है. 15% is given as light. मतलब कि 15 जूल energy is what is emitted. So how many photons will this have? अब तो मैंने I've done half the numerical with you. The approach for this is, इसी को यूज करिए. We will use this. E equal to hc by lambda we will use, and we'll put a n there. What is n? N is number of photons. ठीक है. तो बड़ा नंबर होगा, काफी बड़ा नंबर होगा. एक सेकंड में इतने ढेर सारे फोटोन निकल जाएंगे. अब वो सेकंड कहाँ गया? देखो, पर सेकंड निकाल रहा है ना. यू हैव टू गेट द नंबर ऑफ photons per second. Here also energy is per second. So 15 joule per second. I've ignored the per second because answer what you get is the same. ठीक है. वही तो बता रहे, ट्रिक ही तो बता रहे, सब कुछ कर ही रहे. ठीक है. हाय अजहर, हाउ यू डूइंग? सो क्या किया यहाँ पे? ट्रिक नहीं है, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है. सी, दिस वुड कम, अगर आया तो
सेकेंड पार्ट वाले में नीट में आएगा। नीट में दो पार्ट होते हैं ना, 1 to 35, 36 to 50। 36 to 50 में से आपको बस 10 सवाल करने होते हैं। दोस क्वेश्चन आर स्लाइटली हार्डर देन द फर्स्ट 35 एटलीस्ट इन केमिस्ट्री। तो अगर ऐसा सवाल आया तो दूसरे वाले पार्ट में आएगा। इट इज डूएबल, एक ही इक्वेशन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट यू हैव टू थिंक ऑफ हाउ टू स्टार्ट। दिस इज हाउ यू स्टार्ट। नाउ कैन यू ट्राई दिस, जो मैंने अभी आपको बताया है, अजहर, गगन, ओम, इसको लेके आप ट्राई करोगे। वन इक्वेशन, वन वेरिएबल, एच की वैल्यू तो यू नो एच इज व्हाट। दूसरा कलर यूज करके लिख लेते हैं यहाँ पे, 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ये हो गया एच। व्हाट अबाउट सी? सी इज 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और कोई चीज चाहिए? लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 पावर माइनस 10 मीटर, राइट? ठीक है, अब सब कुछ मिल तो गया, सब कुछ मिल गया। ऑल आई हैव टू डू, आप लोग ट्राई करो, आई विल आल्सो सॉल्व इट विद यू, यू आल्सो प्लीज ट्राई। सो आई विल डू n and then we will write into 6.6 into 10 power minus 34 into 3 into 10 power 8 divided by, क्या था वो, लैम्डा ना, 5500 into 10 power minus 10 is equal to 15। n उसी तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। कैन यू सॉल्व दिस? टेल मी, दैट्स इट यार, कुछ करना ही नहीं है। इन फैक्ट इफ वी गेट द नंबर एंड दिस, यू आर सॉर्टेड। रफ रफ अप्रोक्सीमेशन भी चल जाएगा यहाँ पे। कैसे करें रफ अप्रोक्सीमेशन? लेट्स कैंसिल स्टफ आउट, सम थिंग्स कैंसिल आउट नीटली। 1 दिस गोज 5 टाइम्स, और कुछ कटेगा? लेट्स सी, आई थिंक या 11 goes 500 times over here, this goes 6 times or 0.6 times. If I do 1 point, if I do divide by 11, this is 0.6. If I, yeah, that's fine. So 11 is 500 times, ठीक है। So now looks like n is 500 into 5 by 0.6. So I'm getting this to be 500 into 5 by 0.6. Okay, and what is the 10 power वाली चीज क्या होगी? 10 power वाली चीज, this gets cancelled, becomes minus 24। ये दोनों को हटाओ तो बन जाएगा minus 16, है ना? ठीक है, और कुछ बचा? ठीक है, into 10 power 16। तो looks like the coefficient is going to be 19। ठीक है, 16 plus 1 2 3, 3 0 और यहाँ पे 0.6 आ रहा है, ठीक है। This becomes 2500। Let me just write that directly, ठीक है। ये हो गया 2500 into 10 power 16 divided by 0.6। So looks like I'm getting something like 4, yeah। So मेरे हिसाब से आंसर should be C। What do you think? थोड़ा टाइम लगा सॉल्व करने में। सो आई सी कि अगर ऐसा सवाल नीट में आया, यू बी लाइक कि भाई छोड़ दो, विच इज फाइन। 15 में से आपको सिर्फ 10 करने हैं। देन यू हैव टू बी गुड एट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू हैव टू बी गुड एट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन टू डिच द फिजिकल केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन। आई एम बीइंग वेरी अपफ्रंट विद यू, आई लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, मुझे पसंद है, बट माय गोल इज टू टेल यू हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम एंड गेट द मैक्सिमम मार्क्स। सो आई वुड से कि अगर ऐसा टेस्ट, अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आया, प्लीज स्किप इट, यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड दिस मच टाइम ऑन दिस। If you can do it quickly, if you are aiming for a score of 700 plus, maybe you will find this easier to do. But if you are, those people are, come smaller compared to the other. If you 650 also very good score. If you're getting a 650 700, then you have to pick your battles carefully. Okay, you may want to spend some more time on physics. You may not want to spend this much time on the chemistry question. Fine, then you will leave it. Anyway, इससे ये आंसर मिल रहा है मुझे। What did you think? आपको क्या आंसर मिल रहा है? Did you guys try this or is this difficult? आपके लिए क्या लग रहा है? थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब क्योंकि थोड़ा बहुत मैथ्स है, अरिथमेटिक है। या आई एम गेटिंग एग्जैक्टली, अगर इसको करो, इफ यू सॉल्व दिस, यू गेट एग्जैक्टली 4.16 into 10 power 19। एग्जैक्टली ये मिलता है नंबर, विच इज क्लोज इनफ। मैंने अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत किया क्या? नो, आई डोंट थिंक आई डिड एनी अप्रोक्सीमेशन, बट ठीक है, कूल। आई डिड, मैंने ये अप्रोक्सीमेशन किया। Instead of taking 6.634, I took it as 6.6। The actual value is 6.634, right? मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ले लिया है। Give me a thumbs up if this is okay. Om, Gagan, Azhar, anybody else who's also watching it live, give me a quick thumbs up. It would be good to have that feedback to know that you guys are all good. Okay, so this was a question. Let's go on to the app now. Yeah, app वाले सवाल are going to be more at the level of NEET for sure. Oh, interestingly, पहला सवाल जो आया, I don't know what question would come. Okay. Millikan oil drop is not in your syllabus, so that's the thing, right? You can always quit and come back and you will see a different question. It's not in your syllabus, why do it, right? एक और Millikan वाला आ गया, नहीं चाहिए मुझे Millikan वाले सवाल, देखते हैं, नहीं, we will skip it. चलो ये भी फिर से वो सी गए, ठीक है, cool. We will just mark this answer, okay, and not count it, so to speak. The increasing order of
charge by mass, ये सब I think the reason why we're getting all molecular oil drop experiment because the algorithm is figuring कि पहला मुझे molecular oil drop experiment से concept से आपको सवाल देने हैं. That's how it works. Okay, the algorithm. So let us just say ठीक है molecular oil drop के बारे में बात हो रही है, तो एक बार इसका screenshot ले ही लेते हैं. We'll solve it just for fun, but this is not really in your syllabus, right? Warm up पहला वाला है. This is the warm up section of the this thing, and I will put it. So what I'm going to do, by the way, अगर आपको इसके नोट चाहिए etc., you will find them. Yeah, on Telegram and everywhere else. Telegram, Discord, जहाँ पे भी आप चाहो आना, उसको आप आके देख सकते हो. So I've copy pasted this on this thing. The increasing order of charge by mass ratio. मतलब mass अगर कम होगा, mass इसका ज़्यादा होगा, that will have the least value of E by M. Okay, and mass इसका होगा कम, that will have the higher value of E by M. So I think electron should be at the end. So it's either C or D. Yeah, मेरे हिसाब से it is going to be either C or D. Yeah, not A or B. It is definitely either C or D. ठीक है? This is fine. ये idea ठीक लग रहा है आपको? Yeah, we won't spend too much time on this one. And out of this proton, yeah, this seems to be it. No, alpha particle सबसे कम होना चाहिए ना. Increasing order of charge by mass. Oh, there's also this complication of charge, huh? Alpha particle has a 2+ charge. Things get interesting here. 2+ charge and 4 mass, है ना? अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है? नहीं, मास कितना होता है? अल्फा पार्टिकल हैज मतलब कि हीलियम 2+. हीलियम का मास होता है 4 ना, उसमें हो गया 4. हाइड्रोजन हीलियम, oh no, it has a mass of 2, not 4, it has a mass of 2. So it is basically 1 proton plus 1 neutron divided by, that's the mass, and the charge is 2, right? So 2 plus by proton plus neutron. This is actually a slightly difficult question. So we have to figure out it's going to be either that or that. Now, and ये वाला proton is basically plus divided by, I'm gonna skip this calculation because it's not in a syllabus. I don't want to scare you with all of this. But the general idea is कि इसका जो है कम होगा, alpha का थोड़ा सा कम होगा. Okay, this is what the answer should be. Let's see. Yeah, you can look at it. You can look at the solution. Okay, यहाँ पे है the thing. You can check it out. But the main idea is कि उसमें जो है ज़्यादा alpha particle में charge ज़्यादा है. Yeah, आप क्या कर रहा है साजिद? पढ़ाई कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं यहाँ पे 8:30 बजे 8:45 पे? If you are here, I hope you are studying too. The isotones of barium are what? Hey, isotone. अच्छा, isotone इस टॉपिक में है. अच्छा, हाँ, atomic structure में. I thought it was there in periodic table. But ठीक है, कर लेते हैं. यहाँ पे आया तो कर लेते हैं. Isotone. एक मिनट, ये मैंने सही वाला टॉपिक खोला है ना. I've opened up this. Let me just check. Yeah. This is atomic structure, so that you open. Okay. What are the isotones of 138 barium and 56? Isotone का मतलब क्या होता है? किसी को मालूम है क्या? What on earth is isotone? किसी को मालूम है? Isotone क्या होता है? Anyone knows what's an isotone? Oh, साजिद, बढ़िया. वेलकम साजिद. हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की पढ़ाई कर रहे हैं. आप क्या कर रहे हैं? For NEET, which is an awesome exam for aspiring doctors in India. Isotone का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे दोस्तों? साजिद, do you know what isotones are? Yes, no, maybe. Let me put the screenshot of this question also on your screens. Too easy. Okay, this is the definition. Neutrons same but different protons. How do we do this? So for example, sulfur 36, 16 and chlorine 37, 17. These are isotones. इसका जो protons अलग है, but they both have 20 neutrons. ठीक है. अब इसमें कैसे करें? इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? बेरियम 56, 138 minus 56 में कितने हैं? 82 न्यूट्रॉन्स हैं. Okay, where else do we see 82 neutrons? I feel that lanthanum में है 82 clearly. Strontium में नहीं है. It's not possible. Isotones. What? 82. Obviously, it's not true. Hey, ये थोड़ा सा अजीब है. It has to be very high numbers. Has to be D. What do you think? D होना चाहिए ना? Because the number is very high. I don't know what this is. 80 odd है तो ज़्यादा ही होगा, right? Isotones are species that have the same number of neutrons but different atomic numbers. That's it. It had to be a big number. It can't be the smaller ones at all.
ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं, बस चले। Here you go. Here is a question that you guys are more familiar with, right? This is something that you'll be able to do in your sleep, है ना? What are the correct set of 4 quantum numbers for these valence electrons of rubidium? रुबीडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रुबीडियम में सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। दिस इज फाइन, राइट? रुबीडियम हैज जस्ट वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। If you're wondering what I'm doing, I'm copy pasting this question onto your screen. There you go. ठीक है, रुबीडियम। रुबीडियम है क्या? रुबीडियम यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो एटॉमिक नंबर है 37. How do I know it has just one valence electron? This is 36 plus 1. What is 36? क्रिप्टॉन है क्या? कुछ और है? गैस, कौन सी गैस है? What is 36? Does anybody remember? Let's open up the periodic table. क्यों याद रखें ये सब चीजें जो हम लोग periodic table में खोल के आराम से देख सकते हैं? One moment. This. एक second. And here is the periodic table. Okay, awesome. Rubidium 37, 36 is krypton. We were right. We're absolutely right. Cool, great. Good to check. Yeah, and we do a free promo for that awesome site. Okay, so krypton is definitely 36. Yes, thank you, Arpana. Absolutely. Here we go. Okay. So krypton, and uske baad kya hai? Is this 5s1? I want to say 5s1. What do you think? Is it 5s1 or 4s1? 1, 2, 3, 5. I'm sure it's 5s1. But this is something you have to figure out, okay? You have to be careful about this. Luckily आपके लिए चारों जगह 5 ही दिया हुआ है, ठीक है? So that's not something you have to worry about. 5 है कि 6 है कि 4 है. 5s. अगर s है, उसकी L value will be equal to 0. Magnetic quantum number is also going to be 0. Why? Because L takes value of 0 to n minus 1. ML takes values of minus L through 0 to plus L. This is the logic. Okay. MS can be plus or minus half. दोनों हो सकता है. Luckily सब जगह plus half ही है. तो आंसर शुड बी ए. कल्पना, व्हाट डू यू थिंक? मेरे बांग्लादेशी बंधु, आपको क्या लगता है? शायद मैं आपकी बात समझा नहीं, बट या ऑफ कोर्स ऑनलाइन तो है, जरूर है. या एस ब्लॉक 5th period. Next question. Match list 1 with list 2 and select the correct set from the following sets given below. Interesting. Okay, ठीक है. इसको मैं स्क्रीनशॉट बाद में लूंगा. लेट्स फर्स्ट एनालाइज दिस. ठीक है, इसको हम लोग एनालाइज करते हैं. लिखा क्या इसमें? लिस्ट 1, नंबर ऑफ सब शेल्स इन एनर्जी लेवल, इन एन एनर्जी लेवल. ठीक है, so let me write down over here so it's easy to understand. List 1, number of subshells in energy level. अगर पूरा पढ़ने में ना आए तो. सेकेंड वन इज क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल. Okay. What is number 3? Number of orbitals in a subshell. Subshell. और चौथा क्या है? चौथा है n equal to L, n equal to 3, L equal to 2. This would be easier if the phone was in your hand for sure. And the options I have here are n square, 3D, 2L plus 1 and n. And ठीक है, we can match this. यहाँ पे कुछ options दिए हुए हैं. You can look at the option and figure it out. Abha, this is 11th. आभा, ये क्या है? लाइट गई, प्लीज लाइट मत जाओ. आभा, दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th ग्रेड. शाहिद जी, जरूर है, जरूर है. गो टू द साइट, you'll be able to get it. Bro, Abha, what are you talking about? This is atomic structure. Okay, number of subshells in energy level. Subshell क्या होता है? एनर्जी लेवल क्या होता है? एनर्जी लेवल इज n. सबशेल क्या होते हैं? सबशेल एसपीडीएफ को सबशेल बोलते हैं ना. ऑर्बिटल फिर क्या हुआ? ऑर्बिटल आर दीज थिंग्स. एस पी, अब डी में नहीं करना है, ठीक है, काउंट कर लो तुम. एस पी डी एन एफ एंड ऑल दैट. बेसिकली 2L plus 1 is the number of subshells in an energy level. So this I feel should mark with this. What do you think? आपको क्या लगता है?
It is grade 11. It says 12th on thumbnail. I changed it. Abha, I think शुरुआत में did it said, I think on the when it was posted on the Telegram group it said 12th. I changed it. Yeah. No, Abha, you are right. गलत था उसमें. शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ ले मेरे भाई. टाइम पास मत कर. कहीं और जाके कर ले टाइम पास. यहां मत कर. See, this is fine. Okay, what about the next one? Orbital then shell. Orbital मतलब SPDF. Orbital then shell. SPDF. No. Orbital मतलब ये वाले ना. कितने होंगे? How many do we have? Orbitals in shell, orbital subshell. What is shell? Shell is KLMN. Okay. Is this getting confusing? Oh, Abha is saying right on Telegram I said well. Don't worry about it. Okay, if I erase all this, how do you figure this out? What is n square, 3d, 2l plus 1 and n? Can we hack this and not spend time on it at all, be completely shameless and do this very quickly? N equal to 3, L equal to 2 is definitely 3d. Okay. So this is done. Okay. Scrolling is fun when you have matched the following. D goes with 2. Whew. D goes with 2. Great. D goes with 2 in all of them. Sub option mein D is 2. Lovely bhai. That did not solve our life. Make our life easier. Number of orbitals in a subshell अब तो करना ही पड़ेगा इसको और कोई option नहीं है. What is N? N is basically energy. है ना? So I think we can just go and say I'm going to take a guess here, or because you guys are not very active on the chat, so maybe this is hard to read, which is fine. But the general idea is that n square is total number of क्या बोलते हैं एनर्जी लेवल में इतने सबशेल होंगे. ठीक है. Number of orbitals in a shell. Number of orbitals in a shell. Shell मतलब KLMN. Number of orbitals in a shell is 2n square. No, it's not n square. It's 2 times n square. Okay, let's see. Let's go with 2, 1 and see what it says. B1. Okay, B1, D2. Some may B1, D2. I'm going to take a guess here and just mark this and see what happens. Yeah, it is A. Great. Number of orbitals in a shell is n square. Hey, I thought it was 2n square. No, Abha, it's not. Yeah, number of orbitals is n square. Great. Question is chill. It's just that the way this looks is a little bit scary. Arpana, thanks. Arpana says number of orbitals is n square. Let's see. Is it n square or is it 2n square? Oh, 2n square is number of electrons. Good. Arpana, well done. 2n square number of electrons. Orbitals is n square. Excellent work, Arpana. Badhiya. Well done, well done, well done. Oh no. मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया इसका. ठीक है, never mind. Next, अगले वाले का ले लेंगे. The kinetic energy and PE, potential energy, electron volt of electron present in third bohr orbit of hydrogen are respectively what? This is a slightly tricky question. Slightly tricky question. Try करो आप लोग. देखो, if you have attended my session, you will be able to do this in your sleep. If you have not attended my session, कहीं और से भी पढ़ाई की है, तब भी आप कर पाओगे. But थोड़ा सा डिटेल में आपको याद करना पड़ेगा कि wait, what is potential energy, what is kinetic energy, which one's positive, which one's negative, ये सब आपको सोचना पड़ेगा. Kinetic energy has to be positive. ठीक है, half mv square है, it's a positive number. Potential energy has to be negative, and PE is equal to 2 times KE. If I take the modulus of this, right, potential energy modulus, it's going to be twice of kinetic energy. ठीक है, ये सब हम लोग कर चुके हैं. This is theory. Yeah. Do you remember this? Yes, no, maybe. Rohit, welcome. Rohit says B. Kinetic energy and PE. Yeah, Rohit. I like what Rohit is saying. Rohit ने बिल्कुल सही बोला. आभा ने भी पकड़ लिया है. Just from this logic. See, nothing else is given in this question. इस question में और कुछ दिया ही नहीं है. But I don't need anything. See, this is a 5-second thing. You just know this idea and you solve the question. You don't even have to worry about the whole third, fourth. कोई जरूरत नहीं है. Options are not the same, Abha. The positive negative thing is what gives it away. Positive negative thing and also the sign, right? I'm sorry, the magnitude of the options. उससे you can figure it out. Sure, you can also go ahead and solve it, but I would suggest that जरूरत नहीं है. So देखो, and I would never suggest this if you were in the learning phase. We are in the test taking phase. Learning phase में जब आपको पढ़ाता हूँ, I would teach you things inside out. Say इसको ऐसा ही करना चाहिए. This is a good way to do it. Best way to do it. Similarly,
Now we're in the test taking phase. Test taking phase is the fastest way to do it. Please don't solve this question, especially अगर ऐसे options आए तो. If you want to solve it, you can definitely do this, right? There's no concern about this. It is क्या है? Energy by n square, right? Z square by n square, है ना? This is fine. N square by z square. How are kinetic energy potential energies related? Bohr's work. Do you need the formula to solve this? See, hint में भी यही लिखा है. Formula की जरूरत है कि नहीं? That's it. All right, Arpana. All right, great. Okay, we've cleared this stage. एक और सा chill question करते हैं. Then we'll get back to the whatchamacallit, this wala part. Two electrons occupying the same orbital may be distinguished by what? N, L, M या S? किस चीज से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन चीजों को? Wait, this is being a little funny. Okay, this is better. D, Mihir. S, Abha says spin. Yes, I agree with you guys. 9 moment. I did not realize I have Telegram on. Uske notification. Let me close that. Okay, I've closed it. Great. Yeah, absolutely. So what is constant is N, L, M values, right? Orbital is defined by all of this. The actual electron is with S, which is plus or minus half. So you guys are absolutely right. It should be S. Good job. बढ़िया. चलो next stage करते हैं इसका. Strides. We are on to strides. In vacuum, this is a nice question. In vacuum, all types of electromagnetic radiations travel at the same speed regardless of the wavelength. मतलब वेवलेंथ कोई भी हो, स्पीड सबकी सेम होती है. टेक्निकली ये वाला सवाल तो फिजिक्स का सवाल हो गया. वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं, all of that. Yeah, but ठीक है, we can do it in chemistry. It's the same. Actually, you'll see modern physics is the same as atomic structure. So repetition, you better get it right. इसको पढ़ो यार, ठीक से पढ़ो. True. Weird questions popping up. If two electrons are shared between two atoms, do they have opposite or same spin? Abha, that is a wonderful question. We will address it in chemical bonding, Abha. Chemical bonding में, in fact, जैसे कि most accepted model of the atomic structure is the quantum mechanical model. Similarly, the most accepted model of bonds being formed are in chemical bonding due to molecular orbital theory. हम लोग अभी atomic orbitals की तरफ बात कर रहे हैं. जब two atomic orbitals combine, you get molecular orbitals. How will they combine? We need a little bit of quantum mechanics for that. But we'll look at it. ऊपर से हम लोग देखेंगे chemical bonding. If you are feeling like you want to watch it right now, you have my session. You go to my bento link, look up chemical bonding, उसमें है. True. बढ़िया. Yeah, it is frequency into wavelength, right? See, same है. चलो, बढ़िया. The wavelength associated with the golf ball. I like this question. It's a fun question. The wavelength associated with a golf ball. This is to prove that ये भाई साहब थे ना हमारे Victor de Broy's wavelength is not really relevant for macroscopic particles. This helps you get that, right? Sure, we are matter and we are also we ourselves can behave as waves, but our wavelengths are really small, right? That's what you want to talk about. The wavelength associated with a golf ball weighing 200 grams and moving at a speed of 5 meters per hour is the order of what? Yeah, what do you think about this? What do you think about this one? How do you do this? वेवलेंथ क्या होती है? डिब्रॉय भाई साहब ने बताया. कुछ लोगों को डिब्रॉगली बोलते हैं, कुछ लोग डिब्रॉय बोलते हैं. फ्रेंच भाई साहब है तो उनका नाम डिब्रॉय है, अकॉर्डिंग टू उनके गांव में जैसे बोला जाता है, डिब्रॉय बोलते हैं. ठीक है, फ्रांस के गांव में. दैट इज, आई एम नॉट इवन मेसिंग विद यू राइट नाउ, आई एम नॉट किडिंग. लैम्डा इज इक्वल टू h by p, which is h by m into v. Now h you know is 6.6 into 10 power minus 34. मास है इलेक्ट्रॉन का, नहीं मास नहीं है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं है. देखो, you have what muscle memory, and I would have written electron का mass. That's not what we need. 5 meter per hour. I don't need per hour. I need second in the denominator. So let's put second in the denominator. 3,600 seconds and 1 hour. Right? You see what I did there, right? I am trying to cancel out this whole hour wala business. तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा. Look, I know for a fact that 1 hour is 3,600 seconds, right? That's a given. But किसको ऊपर लिखे, किसको नीचे लिखे, that you write because you want to cancel out this hour wala business. So now you have everything in meter second. ठीक है, this is joule per second. I think we maybe need to convert this to kilogram. Let's go with that. Let's go with 1,000 gram into 1
किलोग्राम। लेट्स डू दैट, है ना, तभी तो मीटर में बात होगी। ग्राम ग्राम कैंसिल, ये हो गया 0.2 किलोग्राम। अब देखो 5 into 0.2 हो गया 1, so multiply both of this is just 1. Beautiful question, isn't it? This is just 1. So in a sense I've got lambda to be 6.6, ये कलर नहीं अच्छा है, इसको नहीं, हरा यूज करते हैं। We got 6.6 into 10 power minus 34 into 3600। एक मिनट, कुछ गड़बड़ की क्या हम लोगों ने? इतना छोटा तो नहीं, हाँ एक्चुअली दिस मेक्स आउट, सो दिस इज आंसर इज सी, है ना। जब तक मैं बोल रहा था, हाँ जब तक मैं बोल रहा था तब तक आप लोगों ने आंसर दे दिया। रोहित, मौसमी, आभा, एवरीवनस फिगर्ड आउट, है ना। 34 10 पावर 30, वेरी इजी, एग्जैक्टली 5 मीटर पर आवर। इट्स लाइक it's like a golf ball that you know 5 meter per hour, you know, I don't know, no logic to this one. This is a random question. It's like mathematics, right? कि a banana seller had, a fruit seller had 300 bananas and 400 apples, and you do some maths. It's like one of those questions. The uncertainty in position of an electron is 0. The uncertainty in its momentum will be what? Again, a theoretical question, but this test कि अगर आपने uncertainty principle पक्का पढ़ा है कि नहीं, इसका हाइसेनबर्ग बाबा का, Heisenberg's uncertainty principle is what we are testing. This is the theory. What did Heisenberg's uncertainty principle say? It said that uncertainty of position and momentum has to be greater than, equal to h bar by 2. h bar नहीं कुछ बोलते थे, h cap, I think ना, कुछ तो कोई किसी ने मुझे बताया था last time, right? Okay. So if we are saying एक की 0 हो गई, but that's not possible. It's saying it has to be, the multiplication has to be greater than, equal to h bar by 2. So if you are saying ki one is 0, then the other must be infinite. Again, hypothetical idea hai, isliye I'm explaining it. I'm not waiting for answers. I haven't got any answers also so far, इसलिए मैंने explain कर दिया। मेरे हिसाब से ये infinite होना चाहिए. This is a mathematical idea. If you're saying that x into y has to be greater than some number and you're putting one number to be 0, that means that the other number has to be infinite. Also, this is why Bohr's ideas failed, है ना। यही तो बोल रहे थे कि बोर सेट की रेडियस एग्जैक्टली ये होगा इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी एग्जैक्टली ये होगी, एनर्जी एग्जैक्टली ये होगी। That doesn't work with Heisenberg. This is one of the theory things we did. If you pinpoint this, then you have no idea how fast it's moving. If you know exactly how fast it's moving, you have no idea where the electron is. Hence, the uncertainty must be infinite. That's the idea. Yes, Ankar, bilkul sahi. Yeah. Yes, Rohit, Mihir. Yeah, Abha, absolutely. Badhiya. Sweet. All right. P is the probability of finding the electron. Let me put this up. Let me take a screenshot. आप लोग पढ़ो तब तक. Oh, this is an interesting question. Oh, I love this question. I have taught this, and we can do. Don't worry about it. I'll see किस चीज को मैं करूँ. Let's do P is probability of finding an electron. Is it ठीक है? तो what I will do is I will screenshot में. I'll figure out how to do the screenshot. Let me think about that. But basically, these graphs are showing probability in a spherical shell of infinitesimal thickness dr at a distance r. Volume of the shell is 4 pi r square dr. The quality schedule depends on P versus R. देखो दो टर्म्स होते हैं, साई एंड साई स्क्वायर, तीन टर्म्स, एंड साई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। इस लास्ट वाले टर्म को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इज दैट द राइट स्पेलिंग? प्रोबेबिलिटी, या इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। क्यों? प्रोबेबिलिटी से मैंने वॉल्यूम डिवाइड कर दिया, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो नाउ दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। द रीजन आपको इतना मुश्किल सवाल मिल गया है बिकॉज वी बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट। यू सी दैट टिक टिक टिक, अब यही होता है। ऑल्दो दिस सपोज्ड टू बी नीट, बट वी हैव आंसर्ड, इफ यू आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली, यू विल गेट मोर हार्डर क्वेश्चंस बाद में, एंड दैट्स व्हाट्स हैपेंड राइट नाउ, ठीक है। What is this question asking for? It is not asking for probability density psi square. It is asking for psi square into dv, psi square into volume. अब ये है क्या चीज? I'll explain. Don't worry, I'll explain. I'm just taking screenshots and putting them up right now on the PPT so that बाद में अगर आप इसको देखोगे, this will make sense to you. Let me quickly do the screenshot वाला business.
and then I'll explain to you that it is actually very easy to do. ये करना मुश्किल नहीं है, देखने में लग रहा है भाई भारी हो गया, but it's not that difficult if you just do it from first principles. ठीक है? And इसमें एक और चीज लिखी है besides this. One second, hold on. Still taking screenshots. I got to take them two at a time, right? Because they're huge. You got all of this. One moment. They're going to be a little tiny on your what should I call it? On the PPT, a little bit tiny, but you'll still be able to make out what's happening. Okay, cool. Now let me get back to chat and see what you guys are saying. अरे तुम लोग फिगर आउट कर लिया, महान लोग हो तुम लोग, ठीक है. ओके, एक और इंफॉर्मेशन यहां दी गई है. यहां पे एक और चीज दिया हुई है कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट probability versus R of a 1s electron or orbital, actually not electron, electron and orbital, 1s electron. ठीक है, समझ गए आप लोग. ओके, now how do we do this? मिहिर and रोहित, कैसे आपने इतनी जल्दी कर लिया? Should be B, Arkan also thinks B. Why is it B? देखो, probability for a 1s, probability density psi square versus R is going to be this. क्यों? Why? Number of nodes, radial nodes, is going to be 1 minus 0 minus 1 equal to 0. मतलब there is no point in the graph जहां पे ये कट करेगा एक्सिस को. This is why option D is off. Option D clearly you can see option नहीं option D नहीं सबमिट करा. Option D में clearly कट कर रहा है. Node पे is also weird shape. It doesn't look like this. It's not possible. Node नहीं है. Option D में it looks like there is a node at, it's weird, semicircle obviously नहीं है, but it looks like अजीब सा है. There's a node coming down there. That's not happening. Also, it's important that these are asymptotes. Okay, this is psi square versus R. दूसरा है volume versus R, then increasing function. इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, if you do 1 into 2, if you multiply 1 into 2, what will you get? You will get this required graph, which will basically look like this. ठीक है? Hence it should be B. This is the idea that we are going with right now. Now say अगर 1s के बजाय 2s दिखाई दे, क्या करते यार? 2s करते तो क्या होता? I'll do it for you. We will do 2s also. 2s में क्या होगा? 2s में होगा कि एक नोड हो जाएगा. एक नोड हो जाएगा. अच्छा. So it will hit this here. This will something like that. ठीक है? This is 2s versus R. Now you'll be like, bro, एक मिनट, ये क्या किया आपने? What did I do over here? 2 phase होगा? Absolutely. अगर 2s हो गया तो ये हो गया. But what if अगर 2p हो गया? 2p हो गया, तब भी शुरुआत यहीं से होगी. But this will change. Now I will not go into detail of 2p. If you want to see what is 2p like and all of that, open up NCERT, वहां पे देख सकते हो. Or you can also go to JD if you want to read some more about it. Is it there in NCERT? अगर 2p NCERT में, we will do that as well. रुको, देखने दो एक second. This is interesting, हाँ? अगर NCERT में तो we should definitely do it. NCERT atomic structure. मैंने वैसे आपके थियोरी में ये सब किया है. अगर आप लोग देख रहे हैं, if you see my theory session, I've been doing all this. ये मैंने किया ही हुआ है. रुको एक मिनट. Probability. I know you're not able to see my screen right now. Don't worry about it. I'll show you. Screen तो देख लें, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. I'm just searching for the graphs right now to see. नहीं, देखो NCERT में सिर्फ 1s और 2s है. So I don't want to make it too difficult for you. कन्हैया, बात हमसे करिए. पढ़ने आए, पढ़ाई करिए. समझ में आया? नाम भगवान का है, थोड़ा लिहाज करिए. ठीक है? देखिए, look at this. सिर्फ 1s और 2s का प्लॉट यहां पे दिया हुआ है. ठीक है? That's the deal. And psi square की बात होगी. psi की बात हो रही तो थोड़ा नीचे से चला जाता. That's it. Cool. We won't talk about 2p. 2p I have done in my session on JEE. You don't talk about it. All right, let's go back to this. मुझे ये आइडिया काफी चिल लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं. And sometimes students find it difficult. That's why I thought we'll talk about it. So anyway, this is it. ठीक है? और वही आइडिया यहाँ पे भी दिया हुआ है कि R is 0, या at R equal to 4 pi R square 0. Number of radial nodes is 0. तो इसलिए यही होगा आपका आंसर. ठीक है? Let us go to the next question. बढ़िया. In an atom, the total number of electrons that have quantum numbers, this क्या होगा? I know it's supposed to be NEET में कहाँ आ गए न्यूमेरिकल एंट्री वाले सवाल, but I told you कि अगर हम लोग, if we get a lot of questions that are right, then you will get difficult questions. ठीक है? And we've been getting a lot of questions right, तो इसलिए थोड़े सवाल मुश्किल होंगे. And it's okay, we'll do them together. If you feel like the difficulty is getting too much, मुझे बताइए,
I will get a few questions wrong on purpose so that the difficulty lowers down. That's how the practice works. It's logic, yaar. I don't have control over what question comes next. I don't have any control. So I'm telling you this. Okay, let's solve this question. In an atom, the total number of electrons having quantum numbers n equal to 4. N equal to 4. And let's go back to yellow. Yellow is a nice color. Okay. N equal to 4. Okay. And ml equal to 1. Mod of ml equal to 1. Matlab it could be ml could be plus or minus 1. ठीक है. And mod of ms equal to half. matlab ms can be plus or minus half. करेक्ट. यही इसका मतलब है. n equal to 4 मतलब क्या क्या चीजें आ जाएंगी. ml shall I solve this? 1 सिर्फ 1. एक ही इलेक्ट्रॉन है. नहीं यार, एक से ज्यादा होना चाहिए. एक तो नहीं हो सकता है आंसर. नो आई फील इट हैज टू बी मोर. May says 2. Okay. आभा यार मॉड लिखा है. आभा इट शुड बी एटलीस्ट 4 इफ नॉट मोर. देखो एवरीबडी एल्स सोचो. L equal to 1. Oh no, hold on. I think you guys. Okay, let's write down. I have S. I have P. 1, 2, 3, 4, 5. I have D. भाई साहब F भी आ गए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब देखो सब में है ना. इसको छोड़ के let's write down the M L values. This is 0, -1 + 1, -1 + 1, 0. I will not care about the other. 0, -1 + 1. देखो कितने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो गए. 4 नहीं 6 है भाई. 6 भी नहीं, और भी ज्यादा है. रुको. ध्यान से करो. इतने बहुत ज्यादा हैं. There are lot more electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. मुझे तो 12 लिख रहे हैं. How are you guys saying 4? I am saying 4, 12, bro. You see how 12? देखो, it is saying that ml can be plus or minus 1, right? So I have fixed ml value. Then spin can be plus or minus half. ऊपर नीचे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों हो सकते हैं, या तो प्लस हाफ माइनस हाफ. तो 12 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकते हैं जिनका mod ml is 1, mod ms is half. That's my logic. If you guys are convinced, I will put 12. If you give me a different number, I will put that number. If you put 4, I will put 4. जो आप बोलो वो करेंगे, because this exam is for you. The practice section is completely for you. मैं जो बोल रहा हूं, I am just here as a guide, as somebody to suggest these ideas. आपको क्या लगता है? हाँ, this is not going to come in NEET. Like I'll write and give. NEET में नहीं आएगा. But since हम लोग कर रहे हैं practice, मजे में कर लेते हैं, है ना? सोचने वाला सवाल. This is definitely a JEE question. JEE main में भी ऐसे सवाल नहीं आएंगे. This is not hard enough for JEE advanced, but it's definitely above JEE main. JEE main is not going to give you a question like this. Like JEE main कैसा था अभी हमने देखा है इस बार. It's not going to give you a question like this. But maybe AIEEE में हुआ करते हैं इस टाइप के सवाल. I think it should be 12. आपको क्या लगता है? What number should I put here? क्या डालूं? जो आप बोलो अभी मैं चैट में मैं डाल दूंगा. बोलो जल्दी से. Let's go ahead and mark this. क्या डालूं मैं? अरे यार तुम लोग हाय एक दूसरे को मत बोलो, हमको हाय बोलो ना. पढ़ाई करने और टाइम पास करना हो तुम लोग. लाइव चैट में हो, थोड़ा तो लिहाज करो पढ़ाई का. एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, पढ़ो भाई. 12 रखें. आप बोल रहे हैं 12 तो 12. बट इफ आई गेट दिस राइट, वी गोना गेट नेक्स्ट क्वेश्चन गोना बी इवन मोर डिफिकल्ट. कर दे लॉक अंकन. ठीक है, आप दोनों बोल रहे हो. भाई ये तो 6 बोल रहा है. अरे तो नाउ व्हाट डिड वी डू मेस अप? हमने कहां मेस अप किया? एक मिनट. दिस गाय इज सेइंग 4p में है 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, ms is half. नहीं, it should be 12. It is not 6. In an atom, total number of electrons having quantum number n equal to 4, ml equal to 1, ms equal to half. No, this is not correct. I'm going to have to send it to my friends. चलो गलत हो ही गया. अभी मैं so every time we do this ना एक सवाल गलत हो ही जाता है. Because ऐप में कभी हो जाता है, ह्यूमन एरर होता है. Don't worry, the answer to this is 12. I'm going to get it fixed by my friend who is an expert in the back end. एक्सपर्ट इन एवरीथिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन जनरल. वो मुझे हेल्प करेंगे. एक मिनट. दिस वन शुड बी 12 एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल है नीट कोहोर्ट में. ओके कूल. चलो अगला सवाल देखें. एक सवाल गलत हो ही गया यार. नहीं होना था गलत, हमने सही किया है. खैर
डोंट वरी अबाउट इट, आवर लॉजिक इज गुड। नहीं नहीं, इट्स ओके, ह्यूमन एरर होता है ना, अभी एआई का जमाना नहीं आया, ठीक है, ये ह्यूमंस ने बनाया तो ह्यूमन से एरर हो जाते हैं, हम लोग फिक्स कर देंगे, एरर भी ह्यूमन करते हैं, फिक्स भी ह्यूमन ही करेंगे, वी विल फिक्स इट बाय टुमारो मॉर्निंग, इट विल बी फिक्स्ड, ठीक है। ओके, चलो गुड जॉब, वी हैव क्लियर्ड। एक और सवाल कर लेते, ये वाला काफी चिल है यार, दिस इज वेरी चिल, दिस क्वेश्चन इज वेरी चिल। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, देखो पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर कर रहे हैं, लिटरली एवरीथिंग इज कवर्ड विद दिस क्वेश्चन, बाकी अभी तक के पूरा वी हैव डन क्वांटम, वी हैव डन हाइजेनबर्ग, वी हैव सब किया है। अब लास्ट आइडिया जो है एक और कर ही लेते हैं। इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम थर्ड एक्साइट, ध्यान से पढ़ना, थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इन द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। नाउ रिमेंबर दिस इज फनी, ओके ओके ओके, सीरीज, दो चीजें दी गई यहां पे, हाइड्रोजन बामा, अच्छा ठीक है, चलो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इट इज सेइंग ग्राउंड स्टेट ऑफ लाइमन सीरीज, लकीली फॉर लाइमन सीरीज n इक्वल टू 1, अगर ये बामा सीरीज बोलता ना, देन यू वुड हैव टेक n इक्वल टू 2, लाइफ वुड बिकम सो डिफिकल्ट। नाउ व्हाट इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसमें n का क्या मतलब हो गया, लुक, all you got to do after you figure this n thing out is just put it over here, इसमें तो ज्यादा, this is like a no brainer equation, right? what is n1, n1 हमको फिगर आउट करना है, n2 is equal to 1, ठीक है, मतलब या ऊपर से नीचे गिर रहा है, अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है इलेक्ट्रॉन तो इट विल एमिट फोटोन, उसका फोटोन का हमको एनर्जी का वेवलेंथ निकालना है, एंड दिस इज द फॉर्मूला टू डू। व्हाट इज आरएच, आरएच इज गिवन टू बी, अरे ये तो क्या हो गया, तो 10 पावर 7 होना चाहिए, रुको वन मोमेंट प्लीज, मैं फिक्स दैट, इट्स गोइंग टू बी कंट्रोल शिफ्ट, ऊपर चले जाइए, या 10 पावर 7, और डन शो, दैट्स वियर्ड ब्रो, वाज देयर इन 3 प्लेसेस, तीनों जगह सेलेक्ट कर लिया, अभी हो गया है ना, सी इज द आंसर। ओके जानवी, ऑल द बेस्ट विथ योर एंडेवर्स। एसके सवाल करोगे सॉल्व, आरएच की वैल्यू ये क्या आ गई, आभा दिस इज कूल नो, आभा दिस लुक कंफ्यूजिंग, आरएच की वैल्यू में एक बार सवाल करके देखो, मैं ट्राई करता हूँ, एसके भाई आखिरी बार बोल रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर करोगे या टाइम पास करोगे, करोगे तो स्टिक अराउंड, अदरवाइज प्लीज करो यार, अच्छे अच्छे सवाल करने को मिल रहे हैं, प्लीज ट्राई देम। सो व्हाट इज एन हियर, वही तो है आभा, दैट इज इन सेंटीमीटर इनवर्स, हम लोग मीटर इनवर्स में कर रहे हैं, शुड बी लेस देन 1, आभा जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल सही है, बट दैट इज इन सेंटीमीटर इनवर्स, दिस इज मीटर इनवर्स, देखो 10 पावर करो, ठीक है, आई टेल यू, आभा करता हूं, देखो व्हाट इज n1, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 4, जैसे बोलते हैं ना, तुम ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, अगर ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट एंड सेकंड, फिर भी दिस इज अ 3 स्टोरी हाउस, right? Same way, this third excited state is n equal to 4. This is n equal to 3, n equal to 2, n equal to 1. Ground state मतलब n equal to 1, ठीक है? Third excited is n equal to 4. उसके बाद तो कुछ नहीं करना है, 1 by 4 minus 1 RH equal to 1 by lambda. So lambda is equal to 4 by 1.1 into 10 power 7. Now what is this now? एक मिनट, कुछ तो हमने गड़बड़ी की है, यहाँ पे एक और 3 होना चाहिए, राइट? I feel like कुछ और मैथ्स में गड़बड़ी की है, yeah, this should be the other way around, not this, should be, I mean this is good, ऊपर से नीचे गिर रहा है, so here this should be 1 and this one should be 4 square, yeah. Big snafu, right? बाप रे क्या क्या कर देते हैं हम लोग मैथ्स के जल्दी में करने के चक्कर में, हियर द लेसन टू एवरीबॉडी, जल्दी में मत करो कुछ भी, ठीक है? तो 15 into 1.1 by 16, no, उल्टा, into 16 by 15, is that the right math now or is it still looking funny? 15 16 15 denominator में, I'm going to use a calculator to do this because I think मैंने फिर से कुछ गड़बड़ किया, yes, 1 by lambda is into 15 by 16, right? हाँ, thank you अंकल, thank you। तो फिर भाई तुम जाओ, यहाँ पे टाइम पास करना है तो कहीं और जाओ, यहाँ तो नहीं होगा टाइम पास तुम्हारा, बाय।
ठीक है, अरे अंकल क्यों इग्नोर करें, तुम लोग इतना एफर्ट लगा रहे हो, आई विल एनकरेज यू टिल द एंड ऑफ दिस प्लेनेट। अब जो तुमको डिस्टर्ब करेगा उसको तुरंत यहां से भगाया भी जाएगा, यू नॉट गोइंग टू टॉलरेट सच थिंग्स। Anyway, so this is going to be little bit less than 1, little bit less than 1. Okay, so something less than 1 into 10 power minus 7. So the answer should be B. That's it. Yeah. Yeah. Abha, you were reading it correctly. वो typo था. I think it should be B. Oh, अंकन गड़बड़ कर दी, देखो इतना बड़ा तो नहीं हो सकता। अंकन, think about it. Can the wavelength possibly be this number? इट्स ओके अगर जल्दी में गड़बड़ी कर दी, जैसे कि मैंने भी यहाँ पे गड़बड़ी कर दी ना, जल्दी में मैंने 10 पावर माइनस 7 ऊपर नीचे नहीं किया, मे बी इवन यू डिड दैट, दैट्स ओके, बट इट कांट बी सी। दैट्स व्हाट आई थॉट कि सी तो नहीं हो सकता है ना, 10 पावर 7 meters is not possible for a wavelength, has to be 10 power minus 7 meters, right? That's the idea. Inertia, भगवान का नाम लो, chant Hare Krishna, and that's all the motivation you're going to need. Any name you like, Christ, Allah, जो भी भगवान का नाम है लो, that's all the motivation you need. Let's go ahead with back to the app. Multiple devices. Which of the following does not, Dalton's is not in your syllabus. Let's end this. I have a feeling he's going to give me a Dalton's question फिर से. Yeah, because that's the concept he wants me to test. Let's see how many times it does that. Every time I end it, I open it up again. The app is so beautiful. It's going to keep giving me Dalton's questions. It's not in your syllabus, so I'm seeing कितना इसको हम लोग stress test कर सकते हैं, just to mess with it and not do Dalton के questions. Oh God, it just doesn't give up. There are so many questions. There have been 5 questions already. This is not going to crash. Don't worry. Question number 6. Is the same question now? Yeah, I think it's the same question. Okay, let's just say true and move on. So there are around 7 questions from Dalton's theory. Looks like so. We have stressed it. Rutherford experiment ये भी नहीं है. चलो इसको टाइम पास में हो रहा है. Atom has Rutherford scattering alpha particle. So हाँ, it has nucleon. नहीं, nucleus होता है. हाँ, ठीक है. आपको करने की जरूरत नहीं है. Ditch. Not your syllabus. ये वाला करते हैं. Work function. Last वाला topic. अरे करने दो यार, सॉल्व क्यों करोगे तुम लोग सॉल्व, इट्स नॉट इन योर सिलेबस, बट आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट फॉर यू। लेट्स डू दिस, इसको करते हैं। ये वाला सी आप इतनी जल्दी कर लिया, पिछले वाला की बात कर रहे हो। देखो यार, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, बट मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूं विद थिंग्स दैट आर नॉट इन योर सिलेबस। फॉर फन वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट सिंस दिस इज सपोज्ड टू बी लाइक अ प्रॉपर हार्डकोर प्रैक्टिस वाला सेशन, मुझे लगा कि लेट्स स्टे ऑन पॉइंट, लेट्स स्टे ऑन टॉपिक, है ना। वर्क फंक्शन, अब आया मजेदार सवाल, राइट। Work function of a metal is some value. Work function. आइंस्टाइन, क्या था आइंस्टाइन ने क्या बोला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, दिस इज अ फोटोन दैट स्ट्राइक्स अ मेटल, उस मेटल का वर्क फंक्शन इज 4.2। आई कैन ऑल्सो राइट दिस एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है विथ सम किनेटिक एनर्जी। I'm not even looking at the question. I'm just writing photoelectric में होता, electric effect में होता क्या, because this is all there is to it. One equation. Radiation of 2000 angstrom. ठीक है. तो which is hc by lambda, which is equal to hc by 2000 into 10 power minus 10 meter. ठीक है. Lambda मिल गया. Kinetic energy is fastest photoelectron. कर लेंगे, ये तो कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, बट चक्कर ये कि ये 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया इन बंदूकों ने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो वी हैव टू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल्स। I mean, that's easy. 1 EV is 1.6 into 10 power minus 19 joule, है ना? Okay, cool. Okay, right? C कहाँ से है? अच्छा, there, sure. Is there a quick way to do this? I feel there should be a quick way to do this. Okay, we can do one of two things. Okay, how about this? 4.2 into 1.6 into 10 power minus 19. Let's leave it as that. Okay, this minus this is going to be equal to K. What is this? hc by lambda कितना हो गया? H is 6.6 into 10 power minus 34 into 3 into 10 power 8 divided by 2000 into 10 power minus 10. Correct? Now this goes how many times? This goes 3.3 times. 3.3 into 3, let's take it as 10.
अगर इसको 10 ले लें एज अप्रोक्सीमेशन, सो व्हाट डू आई गेट, दिस इज 2000 मतलब 3, ये हो गया 7, ओके 7 8 15 15 7 19, perfect. Well, not so perfect, because what is 4.2 into 1.6? If I were to take a nice wild guess, I think it'll be 7, approximately 7. I would say this is approximately minus 7 into 10 power minus 19, which makes it approximately 3 into 10 power minus 19. This is my educated guess, taking, अरे ऊपर चला गया arrow. This is, yeah, this is what I think it is. I think it's C. अनमोल बोल रहे हैं डी, अनमोल 6 पॉइंट, अच्छा अनमोल बोल रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने बाद 6.72 मिलता है, ठीक है अनमोल, आई एग्री, बढ़िया। सी अंकन, अनमोल, बढ़िया। हाँ अंकन, बट आई डोंट लाइक डूइंग दैट, आई डोंट लाइक, बिकॉज इट्स अ एक्स्ट्रा स्ट्रेसफुल थिंग टू रिमेंबर दिस 12,400 एक्स्ट्रा चीजें मग करने की जिसकी जरूरत नहीं है, माय पर्सनल ओपिनियन, बट योर चॉइस, आपको जो ठीक लगता है आप लोग करिए। कभी कभी ना यूनिट्स का खेल हो जाता है, आगे पीछे होने के चांसेस हैं, सो आई अवॉइड दैट। इफ यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट, गो अहेड एंड डू इट। यही सेम चीज यहां लिखी है जो हमने बात की, ग्रेट। इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉन जा रहा है छठी से फर्स्ट ऑर्बिट, फाइंड आउट इन मल्टीपल स्टेप्स, अरे अरे, दिस इज अ जेई क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ नीट क्वेश्चन, but since we have been solving all questions, getting them right, you're going to get more harder questions. So at any point, if you feel, again, I'm just giving you a disclaimer, अगर लग रहा है कि सवाल ज्यादा मुश्किल हो रहा है, tell me, we will purposely get a few questions wrong, at least 1 or 2, so that it tunes down the difficulty a little bit. It's a little complicated. Okay. So how do we do this? Let's draw this thing. Okay, this is 6 5 4 3, नहीं ज्यादा कर दिया हमने ड्रॉ, 1 2 3 4 5 and 6, let's erase the last line, ठीक है 6 हो गए। now if something falls from 2 to 1, that is, कौन सा रेंज है ये, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी। अब कौन सा है, which is infrared, what is UV, what is visible? I think you know कि anything falls to 2, this is a visible range. What about the others? ठीक है अंकन, जैसा ठीक लगे आपको, जैसा ठीक लगे। यूवी कौन सा है, कन्हैया एंड अंकन, यूवी कौन सा होगा, लाइमन सीरीज यूवी, अरे वाह जियो मेरे लाल, वेरी नाइस, दिस इज यूवी, मतलब ऑल ऑफ दिस इज इंफ्रारेड। ओके ग्रेट, lovely, lovely. How do we do this question? We have to find the ratio of total number of radiations, 6 to 1. There is a formula to this. How do you derive the formula? 6 goes to 5 to 4 to 3 to 1, 5 हो गए, 6 goes all the way to, then 6 goes to 5, and then 5 goes to 4 instead of 1, 5 goes to 3, 5 goes to 2, 4 हो गए, 5 4 3 2 1, which is the sum of the first 5 natural numbers. So it's n into n minus 1 by 2. Is this okay? Yes, अनमोल, वाह क्या टाइमिंग थी आपकी, जैसे ही मैंने यहां लिखा एग्जैक्टली उसी समय अनमोल ने टाइप करके बोला, बढ़िया। बट ये आया कहां से, डिड यू फॉलो माय लॉजिक, वी हैव इवन डिराइव्ड दिस ऑन द स्पॉट। देखो थोड़ा सोचो, 6 में से कितने होंगे, 6 to 5, 6 से शुरू करो, 6 to 5, 6 to 4, 6 to 3, 6 to 2, 6 to 1, that's 5। 5 में से कितने होंगे, 5 to 4, okay, then 5 to 3, 5 to 2, 5 to 1, 4. So 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. That's the sum of the first 5 natural numbers. But I want 6 ना, तो normally it's n into n plus 1 by 2, but we'll do n into n minus 1 by 2 because 6 का हो रहा है। अगर ये मैथ ज्यादा हो गया तो भूल जाओ, but this is how this is derived. This is a derivation of n into n minus 1 by 2, है ना, this is a derivation of n into n minus 1 by 2। खैर, anyway, तो 6 into 5, 30 by 2 is 15, तो 15 is all, total is 15, okay। Now we have to find the ratio of number of radiations in UV. UV में कितने होंगे, all to 1, 6 to 1, 5 to 1, 4 to 1, 3 to 1, 2 to 1, 6, 5, 4, 3, 2, 5. Okay. If you want to see which 5, I'll show you which 5. This, 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 this.
ये हो गए 5 यूवी के, ओके, टोटल हो गए 15। सो 5 to 15 हो गया 1:3। लवली नो। अरे 1:3 हो गया ना यार, 1:5 कैसे हो गया यार कन्हैया, यू कंफ्यूजिंग मी लिटिल बिट। हाउ इज इट 1:5 ब्रो? It should be Anmol and Ankan. I like what Anmol and Ankan are saying. Kanai, you also think it's C? It's okay, Abha. Koi nahi. This is a difficult question. It's not an easy question at all. This could definitely be a JEE advanced question. कोई doubt ही नहीं है. But JEE advanced में कुछ और तरीके से पूछते. They would ask it as a numerical entry. They would not give you this. They will ask it as a numerical entry. JEE advanced का जो numerical entry में possible ऐसा सवाल आ सकता है. Possible, sure. कन्हैया सही बोला आपने. Don't retract. सही बोला आपने. See. तो now एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. बढ़िया, अच्छी बात है. एनसीईआरटी मतलब मैंने भी देखी नहीं है लग रहा है बहुत समय से. एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है. ओके, सो शैल आई मार्क दिस करेक्ट और शैल आई मार्क इट इनकरेक्ट? यू गाइस टेल मी. इफ आई मार्क इट करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन गोना बी हार्ड. इफ आई मार्क इट इनकरेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन गोना बी इजी. व्हाट डू यू वांट? इसको मैं सही मार्क करूं, गलत मार्क करूं, आपके ऊपर है. आप मुझे बोलो, वी विल डू व्हाटएवर यू से. एंड इफ यू आर वंडरिंग व्हाट लेंथ ऑफ सेशन, देखते हैं यार थोड़ी देर और, 5 10 15 मिनट और देखते हैं. सेकंड पेज ऑफ क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन. आभा इज ब्रिलियंट. हार्ड करें, चलो करेक्ट करें, चलो बढ़िया. एमिशन ऑफ, एक मिनट यार, आई एम इम्प्रेस्ड विद व्हाट वन ऑफ आवर ऑसम स्टूडेंट्स इज सेइंग. दे आर सेइंग दैट इस पेज पे ये यहाँ पे ये सवाल है. लेट्स सी इफ इट्स एन एनसीईआरटी, दैट्स ब्यूटीफुल. एक मिनट, एनसीईआरटी खोला जाए. एनसीईआरटी खुला हुआ है. अरे पर दिख क्यों नहीं रहा है? हाँ, अभी देखिए एनसीईआरटी. लेट्स गो टू द एंड ऑफ एनसीईआरटी. I have a lot of devices on my table, man. So if I take a little bit of time to figure things out, please excuse me. सेकेंड पेज पे लास्ट क्वेश्चन, थर्ड पेज हो गया नहीं, सेकेंड पेज का फर्स्ट क्वेश्चन. अच्छा मे बी सेकेंड पेज, पहला पेज, दूसरा पेज, पहला क्वेश्चन. हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ एमिशन लाइंस. अरे वाह, 215. लुक एट दैट. वेरी 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 वेल डन आभा. या अंकन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. या दिस इज अ नाइस क्वेश्चन. बहुत सही क्वेश्चन है. देखो, आभा ने एक बहुत वंडरफुल डिस्कवरी की है कि हमको एनसीईआरटी करना चाहिए, व्हिच आई बीन बेगिंग यू गाइस टू डू ऑल दिस टाइम. एनसीईआरटी करो. द ओनली थिंग वो ट्विस्टेड ये था कि इसमें बोला था भाई यूवी भी फिगर आउट करना. सो द एक्स्ट्रा एडिशन थिंग इज काउंटिंग यूवी होता क्या है. यू नीड टू नो यूवी लाइन, देन यू हैव टू काउंट यूवी में कितना, देन यू फाइंड द रेशियो. व्हिच इज व्हाई दिस क्वेश्चन लिटिल बिट ट्रिकी देन दिस, बट सही है. सेम कॉन्सेप्ट. गुड जॉब आभा. एवरीबॉडी एल्स हु इज वाचिंग दिस लाइव, नॉट लाइव, एनसीईआरटी सॉल्व करो, देखो. Hence, okay, great. Let's go to the next question. अरे क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी. Wavelength of an electron and a neutron will become equal when the velocity of the electron is x times the velocity of the neutron. What is the value of x, nearest integer? this is a fun question. Doable, very doable. कोई बहुत मुश्किल वर्ड नहीं है, doable है. वेवलेंथ क्यों होगी? सबएटॉमिक पार्टिकल्स बिहेव एज मैटर एंड वेव्स. वही डिब्रॉय भाई साहब का वर्क वी विल यूज. कोई नई चीज नहीं है, इसको हम लोग कर सकते हैं. विक्टर डिब्रॉय की इक्वेशन लिखी जाए. गिव मी 1 मिनट. ऑलराइट. प्रणाम आशा जी, थोड़ा हेल्प करिए, आप भी सॉल्व करिए. वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन and a neutron. Why will wavelengths be equal? Velocity अलग होनी चाहिए because obviously lambda is h by p, which is h by m into v. So this is going to be equal to h by m into neutron v of neutron. Okay. दोनों इक्वल है ना. lambda h lambda of e is equal to lambda of neutron. अब न्यूट्रॉन कितना भारी होता है किसको मालूम है? वो मास ऑफ न्यूट्रॉन भी दिया होना चाहिए ना. दिया तो है भाई, 1.6. न्यूट्रॉन का मास क्या है? 1.6 into 10 power minus 27 kilogram. Okay, great. This is a downside of this whole
latex thingy that you use to write equation 9 10 power minus 31. ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो होनी चाहिए, किसका वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए ना। देखो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हैज बी मोर, नो, फॉर बोथ देयर मोमेंटम टू बी इक्वल, दोनों का मोमेंटम टू बी इक्वल m into v, velocity of electron has to be higher. Okay, cool. So just using that idea, I will do 1.6 into 10 power minus 27 divided by 9.1 into 10 power minus 31. So this becomes 10 power 4. So ये बन गया 16. No, let's not do that. Let's just do 16 into 10 power 3 divided by 9.1. अब 15, 159. I think this goes by 3, kind of goes by 3. You can kind of approximate it. 3 less than score. 3, those 3 times, and this goes 5 point. What? What? Of course it does not go by 3. What? That was some amazing, brilliant, beautiful math. Oh my god, what was that? Anyway, this is this, let's just divide it by 9. It's so much easier. 7 goes, so 8. Yeah, 1.8 approximately. So 2. 1800. Nearest integer. Oh gosh. That's a little hard. 1758. Kanhaiya. Yeah. This is hard because you have to actually calculate this thing. Yeah, we can't fluke it. We can't do that. 17. 7 बार करें तो 63. फिर 7 gets carried over. यार recurring नहीं है. 177 नहीं होगा. कहाँ गया? 1800 कन्हैया. अच्छा ये 1.6 नहीं 1.67 है क्या? फिर से देखते हैं. व्हाट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ पे क्या दिया है? 1.6 दिया हुआ है ना यार. ठीक है, आभा बोल रही हैं, और सबसे पहले व्लॉग्स भाई साहब ने बोला, मोहम्मद इमामुद्दीन व्लॉग्स ने बोला 1758, तो वी विल गो विद 1758 जो आप लोग बोले. आपका हुक्म सर आंखों पर. 1758. और भी किसी ने बोला था, एक और पर्सन, आभा ने बोला. नियरेस्ट इंटीजर तो 1758 ही हुआ ना, 2000 तो नहीं हुआ. वही तो चक्कर है. नॉट अ फन क्वेश्चन. दिस इज नॉट अ फन क्वेश्चन. आई वुड से यार ये कौन करेगा. Yeah, I would like the answer to be 2, where you say कि into 10 power 3 and then nearest integer, then do 2. हाँ यार approximate करे, कौन बैठे कैलकुलेट करेगा इसको. ठीक है, चलो हो गया. क्या करें? Are you in the mood to do more questions? इसमें तो बहुत है. देखो, there are 10 more questions laps and race and there are some 100 questions marathon. What do you feel? और थोड़े सवाल करने हैं, or do you want to call it a day? Whatever you guys say. I know थोड़ी रात हो गई है, और जो आप बोलो हम लोग करेंगे. और थोड़े. आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर फैन सर्विस और एनीथिंग. आई एम सीरियसली आस्किंग. अगर आपको जहां लग रहा है कि ज्यादा हो गया, देन विल स्टॉप. मजा आ रहा है तो विल कीप डूइंग. करते रहेंगे थोड़ी देर तो करते रह सकते हैं. ठीक है. व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल? 10 बजे तक. ठीक है अंकल, 10 बजे तक करते हैं. अनमोल जेई की तैयारी कर रहे हो? अनमोल यार कल भी हम लोग जेई के लिए करने वाले हैं. जेई वाले सेशन पे आ जाना. हो सकता है कुछ सवाल थोड़े सिमिलर हो, बिकॉज देयर आर सम डिफिकल्ट क्वेश्चन आल्सो हियर. ऑलराइट कन्हैया, लेट्स डू दिस. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s. कल करें. कल भी करेंगे इमामुद्दीन जी, डोंट वरी. 8:30 बजे कल भी मिलेंगे हम लोग. कल भी करेंगे, आ जाइएगा. 8:30 बजे हम लोग जेई चैनल पे मिलेंगे, वहां आ जाइएगा. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक हिंट यहां पे दिया हुआ है, सब में h/2π दिया है. सो द फॉर्मूला फॉर दिस इज √L into L plus 1. दिस इज द आइडिया. अब देखो 2s में L तो क्या वैल्यू होगा, दैट्स ऑल यू गॉट टू डू. And the answer staring at you in the face. It's 0, guys. है ना? Yeah, exactly. Yeah, exactly. Abha and Ankan. That's it. That's it. Let's get back to it. And you like this format where we'll do one chill question like this, and then we get back into the hardcore practice mode. Yes, Savan, Kanaya, bilkul sahi. Anmol, bilkul sahi. Chemical reactions involve the rearrangement of atoms. आई अरे ये फिर से यार डाल्टन वाला कहानी आ गई. Reason is false.
marking C, guys. Do you want to do this? Dalton, हाँ, इसलिए I have this weird face on me. Yeah, I know. सिलेबस अपडेटेड सिलेबस से थोड़ा ज्यादा सवाल है. अरे एटम्स थोड़ी ना इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं. अच्छा ठीक है भाई, बी बोलता है तुम लोग बी, चलो बी डाल देते हैं, जो बोलो आप लोग डालेंगे. देखो असर्शन है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. रीजन इज atoms are indestructible and can neither be created nor be destroyed in chemical reaction. So दोनों सही हैं, but I mean assertion is correct. B can neither be created nor destroyed. B भी सही है, but they're not the reason. I don't think it's the right reason. I think it should be B as well. Yeah, they're both right, but that's not why chemical reaction happened. A chemical, yeah, that's all right. ठीक है, बढ़िया. All of you figured it out. Ooh, एक से ज्यादा सही. देखो, we have been answering a lot of questions correct. So here's this. ब्लैक बॉडी रेडिएशन. हमको इसमें से सेलेक्ट करने हैं सही वाले कौन से. आप लोग पढ़ो, मैं तब तक स्क्रीनशॉट इसका डाल. पिछले बार मैंने स्क्रीनशॉट नहीं डाला बिकॉज इट वाज रियली बेसिक. इफ यू गाइस वांट टू वॉच द वीडियो मे बी यू कैन टू चेक इट आउट. आई एम पुटिंग ये इस वाले का मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं इस पे. Almost there. All right. The ideal body which emits and absorbs all frequencies is called a black body. I like this one. The exact frequency distribution of emitted radiation of a black body depends on the temperature. This also is correct. I think it's correct. In electromagnetic radiation, if you feel differently, please बताइएगा. I will look at the chat. I'm just looking at the option right now. In electromagnetic radiation, the electric field and magnetic field are oscillating perpendicular. And ये भी सही लग रहा है. ये भी सही लग रहा है ना? In vacuum, all types of electromagnetic radiation have. यार वो तो चारों सही लग रहा है. आपको क्या लगता है? I feel all four are correct. है ना? सरफराज बोल रहे हैं क्वेश्चन इज नॉट विजिबल. सरफराज, सवाल था सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. मे बी मैंने एक्सप्लिसिटली बोला नहीं है. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ द सवाल एंड दीज आर द स्टेटमेंट्स. पहला है आइडियल बॉडी अब्सॉर्ब्स. अरे ये था ना कि टेम्परेचर अगर हाई है तो ऐसा होगा, थोड़ा ऐसा होगा, ऐसा होगा. दिस इज हाई टी, लो टी, एटसेट्रा एटसेट्रा. राइट, दिस वाज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. या आभा बोल रही हैं along. नहीं, there are perpendicular. So how this works is like this, right? If I have, just trying to think of this. This is one thing, and let's say this is in this plane. This is in the Z plane. ठीक है? And this is in the X. This is say the electric field. This is the magnetic field. Propagation का डायरेक्शन इधर होगा, which is perpendicular to both of them. ठीक है? You learn this. अभी अगर complicated, don't worry. Physics में तुम आराम से प्यार से बहुत पढ़ोगे. But the theory is this कि it is, है ना? It's okay. Don't worry about it. है ना? Yeah, I think all should be correct. Yo, what up? Good job, everybody. सबने पकड़ लिया, सही चीजें पकड़ी. More than one correct answer. Everybody got this. Nice. Which of the following relations do not represent the correct relations of the potential energy of the electron in the nth shell of the hydrogen atom? I have already told you some of these. इसका मैं एक दो तो आपको बता ही चुका हूं. मौसम भाई, हम लोग तो वही करेंगे जो आपका एग्जाम डिमांड करता है ना? भाई बहन, whatever. I mean, like, not gendering you guys, misgendering you guys, but we are doing questions right now जो आकाश बायजूस ऐप के प्रैक्टिस सेक्शन में है. And I don't know what questions are going to come next. Just like you would open up the practice section, आप अगर देखोगे आपको भी अपने आप सवाल आते जाएंगे depending on your activity on the app. ठीक है? So you will get a different set of questions. If you get every question correct, then you will get harder questions. Right? That's how the logic works. But unnecessarily आपके syllabus से एक्स्ट्रा चीजें नहीं पूछी जाएंगी. So if you're preparing for NEET, it will more or less be around the NEET thing. अगर आप जेई का प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके हिसाब से सवाल आएंगे. And if you keep doing hundreds of questions, then you will eventually do a lot more. And यार हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. If you feel like actually going and solving, you have to spend time on it. है ना? आप ऐप डाउनलोड करो, start doing the practice yourself. Then you will get all the hard questions, easy questions सब आपको दिखेगा. Anyway,
Let's see this. Let's see this. Is all the options? Yeah, this is it. आबा 4 options हैं. यही 4 options हैं आबा. Okay. Mausami is saying B. Total energy is minus KE. ये तो सही है. I feel B is correct. What is wrong with B? B is wrong. B तो सही लग रहा है मुझे. Total is PE by 2, which is minus KE. ये तो सही है. PE plus KE equal to TE, and PE modulus is twice of KE, and PE is negative. Hence, TE is either minus PE, no sorry, is either PE by 2 or it is minus KE. ये तो सही है. This is correct. PE is 2 into total energy. ये भी सही है. PE is KE square by R square, where K is Coulomb's constant and R. अच्छा, ये वाला गलत है. लास्ट वाला देखो गलत है. KE square by R square is wrong because dimensionally KQ square by R square is force into distance is basically KQ square by R. And this you will not know unless you do physics here. I feel C is the wrong option. Dimensionally गलत है. Why is the last one correct? देखो, kinetic or general energy, right? Just say like energy is what? Minus 13.6 n square by, sorry, 13.6 z square by n square. This is the actual idea. Total potential energy is twice of that. So वो भी सही है. Into 2, right? है ना? Ankan, that is force. K z e square, z e square by r square is the force, not the energy. No problem, no problem. आपने सबने फिगर आउट कर लिया, बहुत बढ़िया है. मौसमी, आप बोल रही थी हार्ड सवाल, आसान सवाल में मुश्किल हो गया. ये आसान नहीं था. It's okay. This was tricky. You see, you have to think a little bit. Kanaya, Ankan, good job. Anmol, good work. Good work. Mosmi, good on figuring it out. Yeah. Mosmi, here's the question. You may enjoy this since you wanted a harder question. What do you think about this? I was just copy pasting. Bore radius. Bore radius. Actually, I have taught you this. So if you paid attention in that 1-2 minutes of me teaching you that graph, you'll be able to figure this out. है ना? अभी मैंने पढ़ा है. क्या क्या है? साई स्क्वायर डीवी. 3 चाहिए ग्राफ्स ना, तो 3 का जगह बना देते हैं. साई स्क्वायर डीवी, साई स्क्वायर एंड साई, तीनों ड्रॉ करते हैं. थोड़ा छोटा हो गया बट चलता है. इट्स ओके. ओके. साई looks like this. Psi square looks like this. Psi square dv looks like this. खत्म. ठीक से बनाना है तो ठीक से बना देते. ठीक है, एसिम्प्टोट हो गया यहाँ पे. डन. पहले इसको ड्रॉ करो, फिर देखो ऑप्शन में क्या लिखा है. फर्स्ट यू ड्रॉ दिस. फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ दिस, है ना? एनसीईआरटी में एनसीईआरटी हैज दिस. I have taught you this. We have learned this. टुडे, आज ही सीखा. अगर आपने मेरे पहले सेशन नहीं देखे हैं तो. साई स्क्वायर डीवी मतलब 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, दैट इज डीवी. बताया था ना अभी. डीवी वर्सेस आर इज एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग क्यूबिक फंक्शन है. मल्टीप्लाई दिस विद दिस 1 into 2 will give me 3. I know numbering is weird, but ठीक है, deal with it bro. कितने होंगे सही? A and C are correct. Product of psi square and 4 pi r square increases till reaches. सही पकड़ा, बिल्कुल सही पकड़ा. प्रैक्टिकल वैल्यू है psi square dv. इसी में आपको पता चलता है R0 की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम. बिल्कुल सही. B says psi square increases. No. Psi increases distance of. No. B and C are both wrong. हाय कार्तिका, हेलो हेलो. बी और सी गलत है ना. देखो, बी और सी दोनों सेम है. दे हैव द सेम नेचर.
D, the nodal point for the orbital. नहीं ये भी गलत. Nodal point for the orbital 1s at 0.3 angstrom. नोड नहीं, 1s में तो नोड नहीं है, नोड नहीं है. मुझे तो सिर्फ ए ही लग रहा है. मुझे तो बाकी सही नहीं लग रहे हैं. आपको क्या लगता है? अर्कन से सी साई होगा इंक्रीज. क्यों भाई, क्यों? साई तो विल डिक्रीज. नो, 1s में नोड नहीं है. बिल्कुल सही आभा ने बोला. ए ही होगा सिर्फ, सी नहीं होगा ना. अंकन सी क्यों सही होगा? सी में लिखा है कि साई गोज ऑन इंक्रीजिंग till it reaches the distance of 0.53 angstrom. I don't think that is correct. मुझे नहीं लगता है. क्यों इंक्रीज करेगा? What do you think? आपको क्या लगता है? थोड़ा सोच के आप खुद ही बताइए. I'll wait. No hurry. I don't think that's correct. Putting the right screenshot है दूसरा था. Yeah, it should decrease. You want to see the NCERT? देख लेते हैं एक बार. Here you go. इधर ही होगा कहीं पे. Page up, 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 page. I think it will be easy if I just look for the thing. Here you go. ये है साई, ये है साई स्क्वायर, है ना, 1s का. This is 1s. दोनों डिक्रीज. ठीक, डन. Let's go back to our app. Only A यार. देखो सही है. ये कंफ्यूज कर रहा था हम लोग को. मोर देन वन करेक्ट डाल के कंफ्यूज कर रहा था. एक ही सही है इसमें तो, है ना. क्वेश्चन वाज कंफ्यूजिंग अस, ट्राइंग टू कंफ्यूज अस. वी डिडंट गेट कंफ्यूज्ड. गुड जॉब. कोटा श्रीराम जी, आपने ट्राई किया. शुभी, गुड जॉब. कन्हैया, एक्सीलेंट. आभा, यस. Ankan has figured it all out. All right, last question of the labs. LAPS, no LAPSE. There's no labs. A photon. अरे बाप रे, ये देखो, ये क्या है? मैंने ऐप को कंफ्यूज कर दिया. I have superpowers. Here you go. This is interesting. एक फोटोन अब्सॉर्ब हो रहा है और वो री एमिट हो रहा है. एक का है 400 nanometer. What's the energy of the other? I think this is doable, right? This is basically saying that h nu is equal to h nu 1 plus h nu 2. This one is 300 nanometer. So let's do 300 nm is equal to 400 nm. That doesn't make sense. Wait, oh, wavelength hai. Sorry, like wait, what? 1 by 300 nm is equal to 1 by 400. This is like, you know, resistors in parallel. nm plus 1 by lambda. ये lambda हमको निकालना है. So basically do 1 by 3 minus 1 by 4 and put 100 there after that. ठीक है, is equal to 1 by lambda. 100 दूसरी तरफ ले आते हैं. ठीक है, cool. And remember that lambda is in nanometers. Oh my, 1 by 3 minus 1 by 4 कितना होगा? 4, 1 by 12. Is this 1 by 12? Looks like it's 1 by 12 to me, है ना? 1 by 12 is 1 by lambda into 100. So lambda क्या हो गया? Lambda is 12 by 100 nanometers. अरे बाप रे, मतलब ये हो गया 12 into 10 power minus 11 मीटर. बहुत छोटा हो गया. तो क्या हो गया? ज्यादा हो गया क्या? Am I doing this quickly? What's happening? Am I doing this quickly? Please बताइए. Is there anything you did not follow here? Anything you want me to repeat? Go ahead, take your time. Chat में जो लिखना है लिखो आप लोग आराम से. I'm here. मैं धुन में बैठ के सॉल्व कर रहा था. If you guys did not follow something, please tell me. I will help you out for sure. You read half the question. It's energy. हाँ, एनर्जी करेंगे अंकल, एनर्जी निकालेंगे एंड में. बट आई एम डूइंग एनर्जी बैलेंस. Right, this is what this is. Thank you for pointing it out. Yeah, we're doing energy balance.
यस श्रीराम जी बताइए। सो इस कैलकुलेशन सही लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है? आप थोड़ा देखो, सी इफ व्हाट आई हैव डन इज पैल्पेबल टू यू और डज इट लुक वियर्ड टू यू। आप लोग देख के मुझे बताइए, है ना? मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है, मैंने किया तो मुझे ठीक ही लगेगा, बट यू गाइस टेल मी, दिस इज लुक ओके और दिस इज वियर्ड? बिकॉज इससे मुझे आंसर तो डी नहीं आ रहा है। आई एम गेटिंग 1.656 into 10 power minus 15 is what I am getting with this, right? E is then hc by lambda, right? उसको सब्स्टिट्यूट ये आ रहा है मुझे। C लग रहा है आपको? अंकन से C, कन्हैया ऑल्सो से C, ए आ रहा है आप बोल रहे हैं। What did we do that was weird? You got D? Okay. यही हमने गड़बड़ी की इधर। 100 ना, 100 डालने के बाद, ब्रिलियंट ब्रो, ब्रिलियंट। सो यहाँ पे हम लोग को, I'll tell you the mess up that I did here. It should be 1200 and not this. It should be 1200 nanometers, right? Which means it should be much, 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 much smaller, the energy. Yeah. I know what I did. I know what I did. मैंने जो है जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, yeah, we will divide this and 1200 into 10 power minus 9. Makes sense. What you guys are saying makes sense. Yeah, I'm getting C as well. C है, सही है, सही है, सही है, C है, C है, C है, बढ़िया बोला आपने कन्हैया, बिल्कुल सही है, C होनी चाहिए। आवा, C होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया था, राइट? दिस यहां तक सही है, 1200 is 1200. Yeah. Woo! You guys are awesome, man. तुम लोगों ने सही बताया, मैंने तो गड़बड़ी कर दी जल्दी में। श्रीराम जी आप बोला था आपका सवाल था। श्रीराम, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, गो टू द बेंटो लिंक, गो टू द डिस्कॉर्ड चैनल, गो टू टेलीग्राम चैनल, जितना सवाल पूछना है पढ़ो, पूछो। लुक एट दैट, we did a lot of questions today, huh? 1 2 3 4, we did 20 questions plus 4 or 5, we did 25 questions. Yeah, Abha, that's what even I'll do, I think, because I'll focus on teaching how to do things. Us samay, while teaching you, sitting and doing questions and also blabbering a little hard, I'll just use a calculator next time too. Jaldi jaldi kar le. Pre 10 p.m. leave this. Ankan kya hua? Shubhi? Yeah, see as well. That was great, huh? So I think this 90-minute thing is a sweet spot. We'll try and do these kind of sessions more often. ठीक है? Most welcome, Srihari. Good to have you here. We're just ending the session though. So how was this? Do you want more of these sessions? Next one is going to be tomorrow on the JEE channel, Atomic Structure. Post that, if you're in 12th standard, come on Monday, we'll do kinetics. Tuesday, we'll do kinetics also. JEE NEET pe. Uske baad, we'll do periodic table on Thursday. I think Wednesday I take an off because I'm working on Saturday. And then Thursday again, we'll do more of periodic. And then we'll do electrochemistry and then we'll do more things. है ना? It's okay, it's okay, it's okay. Better late than never. देर आए, दुरुस्त आए. All right. Lot of things were covered today, right? We did quite a few questions. 25 questions. More questions. Kanhaiya. Kanhaiya. We can start at 8 and wrap up by 8:30. How do we do that? Oh, okay. I think Ankita starts sessions at 8, right? At 7. I don't mind starting at 8, but I think she wants the 7 to 8:30 wala slot. That's why I take it like, so I teach on JEE and NEET channel, right? You know my schedule. So there are other teachers who want to do stuff, so मैं like chill है, मैं करेगा रात को. I do at 8:30. I know it would be better for you to do a little earlier. Yeah, but given that I have to teach on JEE and the NEET channel, I'm the only chemistry teacher here right now. So 8:30 is the only time that works. I'll try and move it earlier. If you guys ping, आप लोग please comments में डालो. If you want me to take any other session any other time, आप comment में डालो. I'll try and make it work. I'll tell these guys, look, yeah, students want it, so I'll do it. I have no problem. I'm good with anything. I was just trying to accommodate all the other teachers. But you guys let me know. आप लोग जो बोलो वो करेंगे. By the way, how the app works, if you're wondering, the moment you download this app, what app? It's the Aakash BYJU'S JEE app. Wait, what is this? Oh, what's new? Acha. This is the app you got to download, by the way. We're talking about this app. You go here, go to the chemistry section. You can go to any section you want. And this is the learn modules. There's also journeys and stuff. Go to the learn part of it. Go to atomic structure, which is right at the end. Check it out. और आपको जिसको और सवाल करने हैं यहाँ पे करो.
मैंने ये 4 किए हैं, आप लोग करोगे, मे बी यू विल गेट सम सेम क्वेश्चन। यू सॉ राइट, वी स्ट्रेस टेस्टेड डाल्टन लॉ, पूरे 7 सवाल थे। सो एवरी कॉन्सेप्ट में छोटे-छोटे आइडिया में 5, 7, 10 सवाल होंगे, और है कुछ 15 तो हो गए 50, सॉरी 150 200 क्वेश्चन होंगे टोटली, और मे बी इवन मोर एक्चुअली, देयर मे बी मोर क्वेश्चंस एज़ वेल। खैर एनीवे, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर टाइम। कल मिलते हैं जेई चैनल पे, इफ यू वांट टू चेक आउट द एटॉमिक सब्जेक्ट सेशन, अदरवाइज आई सी यू अराउंड व्हेन यू गाइस कम एंड डू पीरियोडिक के नेक्स्ट वीक। Bye. Good night. Have a good one. Yeah. Okay. Your Akash going 8:50. Okay. 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 Great. Good to know. Good to know. All right. See you. Bye. Good night, everybody. Have a good weekend. See you. Bye. I'll give you the notes on Telegram, Discord, everywhere else.